नहीं, वो उधर से हिल गया आराम से। हाँ जी, अब हो रहा है। ओके, सो जो क्वेश्चन 10 पार्ट 1, 11 पार्ट 3, 15 पार्ट 1 एंड 2। ओके, एक मिनट। ओके, 15 पार्ट 2 सबका कॉमन है, फिर उसके बाद 10 12 पार्ट 1 2 स्टूडेंट्स का है, 10 एक पार्ट 1 और 2 है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डू क्वेश्चन 15 पार्ट 1 एंड 2 बोथ। उसके बाद जो रिमेनिंग है वो मैं डिस्कस करूंगा। आप सबके पास वर्कशीट है? तो मैं वर्कशीट ओपन नहीं करूंगा, मैं फिर व्हाइट बोर्ड ओपन करूंगा सिंपली। Okay, question 15 is, see the question 15. There's a diagram here in question 15. A line with the equation y is equal to 2x. Those who are taking online class, they can open the worksheet. They can open their worksheet. They have the soft copy. मैंने आज worksheet Google Classroom पे भी upload कर दी है और already आपको WhatsApp पे तो की हुई है. You can see the line y is equal to 2x and the curve they are intersecting. The equation of the line is y is equal to 2x and the equation of the curve is y is equal to 2x raised to power 5 plus 3x cube. एक रफ सा स्केच डायग्राम का। Okay, part 1 is show that the x coordinate of a and b satisfy the equation 2x4 plus 3x square minus 2 is equal to 0. We have to show that the x coordinate of a and b satisfy the equation 2x4 plus 3x square minus 2. जी मुझे बताइए कि how to find the x coordinate. So इन दोनों को simultaneously solve करेंगे। y coordinate के लिए भी ऐसे ही करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि x coordinate find करें तो हम we will find the equation in terms of x. Mean y को subject बना के दूसरे में से replace कर देंगे. So the part 1, we know y is equal to 2x, तो आपके पास equation आ जाएगी 2x5 plus 3x cube is equal to 2x. We basically have solved the equations simultaneously. और क्योंकि इन x कोऑर्डिनेट के लिए सिर्फ कह रहा है तो हम x कोऑर्डिनेट वाली इक्वेशन सिर्फ लेके x वाली इक्वेशन. Okay, now shift this on the left. Now we want to solve. अगर इसको solve करेंगे तो we will get the x coordinate of the point of intersection of A, O and B. ऐसे ही है ना, point of intersection आने चाहिए, A का भी आना चाहिए point of x coordinate, O का भी और B का भी. Okay, how to solve them? पहले तो हम देखें कि x इसमें से common आ रहा है. Okay, okay, thank you. X common लिया, so 2x raised to power 4. 3x square minus 2 is equal to 0. So either x is equal to 0 or 2x4 plus 3x square minus 2 is equal to 0. Either x is equal to 0 or देखिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a, o और b के x कोऑर्डिनेट्स आएंगे. अब x इज इक्वल टू 0 किसका कोऑर्डिनेट है, किस पॉइंट का, o का. वो कैसे पता चला, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो 0 है, o का हमें पता है. सो इसका मतलब ये x इज इक्वल टू 0 आया, ये o का कोऑर्डिनेट है, तो बाकी इसका मतलब a और b के कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन से आएंगे. सो इट मींस
From this you will get the x coordinate of a and b. यही प्रूव करना, सॉल्व नहीं करनी. आई थिंक ऐसा ही है. क्वेश्चन चेक करें, सॉल्व तो नहीं करनी हमें, सिर्फ प्रूव करना है कि x coordinate of a and b can be represented with the equation 2x4 plus 3x square minus 2 is equal to 0. So we got that equation. I think second part is solve this equation 2x4 plus 3x square minus 2 is equal to 0. ये तो आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए, कल हमने इसके क्वेश्चंस किए हैं काफी. आंसर्स गलत आ रहे हैं. ओके लेट्स सी कि नॉन रियल तो नहीं आ रहे, देखते हैं बहरहाल. So we have to, in second part it says solve this equation. Okay, solve करने के लिए we know this is not quadratic, but we can reduce this to quadratic. हम क्या लेट कर लें यहाँ पे, वैसे तो डायरेक्ट भी किया जा सकता है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको क्वाड्रेटिक बना लेते हैं. हाउ टू रिड्यूस दिस इनटू क्वाड्रेटिक? लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू y नहीं करना, कोई और वेरिएबल कीजिए, क्योंकि y इस क्वेश्चन में आपको पता है कि y कोऑर्डिनेट होगा. आप कोई और y की जगह कर लें, t कर लें, s कर लें, p कर लें. So let x square is equal to t. So your equation will become 2t square plus 3t minus 2 is equal to 0. चेक करें क्या मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल है. यस पॉसिबल. ओके, कुछ लोग कह रहे हैं हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है. ओके, सो 4 and 1. Common from first two is 2t, so t plus 2 minus 1 t plus 2. So either it is 2t minus 1 t plus 2 is equal to 0. So 2t minus 1 is equal to 0 or t plus 2 is equal to 0. So t is 1 by 2, t is minus 2. So these are the solutions for t. थोड़ा सा वेट करेंगे. t is x square. So अगर t 1 by 2, it means x square is 1 by 2. If t is minus 2, it means x square is minus 2. ऐसे ही हो गया. Now take square root on both sides to remove square. हम square root लेते हैं, और अगर हम square root लें तो plus minus square root 1 by 2 आ जाएगा. और सेकंड, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है. क्योंकि हमें a और b के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, वो रियल होंगे. अंडर रूट -2 इज नॉट अ रियल नंबर, तो वहां से सॉल्यूशन नहीं आएंगे. सो दीज आर द टू x कोऑर्डिनेट्स. कौन कौन से? एक प्लस अंडर रूट 1 by 2 और एक -1 ओवर अंडर रूट 2. इसको मैं अलग अलग लिखूं अगर. अच्छा, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1? It is 1. So 1 over square root of 2 is one answer, and the other is -1 over square root of 2. So these are the x coordinates of the point A and B. Part 2 was, जी बिल्कुल आएगा, उसकी बात भी करता हूं मैं. सॉल्व द इक्वेशन 2x4 plus 3x square minus 2 is equal to 0. हमने सॉल्व कर ली, तो x के 2 आंसर्स आ गए. And hence find the coordinates of A and B, giving your answers in the exact form. Calculator use नहीं करेंगे, giving your answers in the exact form. So यही exact form है. नहीं, अब आप बताएं इसमें x कोऑर्डिनेट कौन सा A का कोऑर्डिनेट है और कौन सा B का है? A का x कोऑर्डिनेट शुड बी नेगेटिव. ओके, चलें पहले तो आप ऐसा करें, इस इक्वेशन को किसी एक, इस x की वैल्यूज को पुट करें, y की जो इक्वेशन थी ओरिजिनल इक्वेशन, किसी एक में पुट कर लें. इसमें मैं पुट कर रहा हूं y is equal to 2x. So y is equal to 2x में अगर पुट करें, y is equal to 2x. So y is equal to 2 into 1 over under root 2 यहाँ पे आ जाएगा, और उधर
y is equal to 2x mean y is equal to 2 minus 1 over under root 2. मैं थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा, शायद आंसर आपका डिफरेंट है, लेकिन अभी आपका आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 over under root 2. 2 over under root 2. This is written 2 over under root 2. और ये क्या है? minus 2 over under root 2. क्या मैं इसको लिख सकता हूँ under root 2 और इसको लिख सकता हूँ minus under root 2? Yes, most of you are saying yes, लेकिन कुछ को नहीं पता होगा, मैं बताऊंगा कैसे. ओके, मैं आंसर पहले लिख लूं, फिर उसके बाद a के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x कोऑर्डिनेट इज -1 over under root 2 and y कोऑर्डिनेट इज -under root 2. b के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 over under root 2 and y कोऑर्डिनेट इज under root 2. नाउ आई विल एक्सप्लेन कि ये सेकंड लास्ट स्टेप से ये मैंने लास्ट स्टेप कैसे लिखा. मीन 2 over under root 2 से ये under root 2 कैसे आ गया, कैसे आया दानियार? वेट, दानियाल बताएंगे. यस, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने जी, आप यही कहने वाले थे. और टाइम खत्म हो गया. ऐसे ही है, एग्जाम में भी ऐसे हो गया, तो मुझे उसका आंसर नजर आ गया था, मैं लिखने लगा तो टाइम खत्म हो गया. ओके, अब देखिएगा, ये मैं इसी की एक्सप्लेनेशन देने लगा हूं. अगर आपके पास लिखा हो 2 over under root 2, मैं इंडिसेस ग्रेड 9 D3 2 power 1 है और डिनोमिनेटर में 2 power 1 by 2 है. सो बेसिस आर सेम, इन डिविजन पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड. सो पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 minus 1 by 2 आ जाएगा. And what is 1 minus 1 by 2? It is 1 by 2. So this is equal to under root 2. That is how 2 over under root 2 is written as under root 2. एक और मेथड बताता हूं, अगर समझ आ जाए आप लोगों को तो देखिएगा. द अदर वे, आप देखिए अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 का आंसर क्या होता है? इट इज 2. अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 इज अंडर रूट 2 स्क्वायर. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 2 आ जाएगा. अब अगर कहीं 2 लिखा हो तो इट मींस आई कैन राइट अंडर रूट 2 इनटू अंडर रूट 2 एज वेल. So 2 can be written as under root 2 into under root 2 and the denominator में under root 2 as it is. Cancel और answer is under root 2. ठीक हो गया? Okay, now tell me what will be the simplified form of 5 over under root 5. How can I write that? Direct answer का क्या होगा? Yes, this is equal to under root 5. How is it that? Because 5 को हम लिख लेंगे under root 5 into under root 5. So under root 5 से कैंसिल, तो एक अंडर रूट 5 रह जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा जी. लेकिन अगर देखें किसी ने प्रीवियस पार्ट में ये कन्वर्जन नहीं की और ये भी आंसर अगर आपने लिख दिया तो दैट इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि उसने कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड सॉरी एग्जैक्ट फॉर्म. तो एग्जैक्ट फॉर्म जो सेकंड लास्ट स्टेप में लिखी है वो भी एग्जैक्ट फॉर्म है, कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म उसने नहीं कही थी. तो आपने सेकंड लास्ट स्टेप में जो आपका आंसर आया, अगर आप वो भी लिख देते हैं तो दैट विल आल्सो बी करेक्ट जी. होप क्वेश्चन 15 क्लियर है आपको. So Mikhail, -2 ka, if you take the square root of -2, there is no real answer for that. All the numbers which are under the root and having negative values, mean under root -1, under root -2, under root -3, these are not real number. These are imaginary number, complex numbers. We will do them in A2, don't worry. Okay, इसके बाद क्वेश्चन
12 पार्ट 1 की क्वेरीज। Okay, question 12 is a curve has equation y is equal to 2x square minus 3x. Y is equal to 2x square minus 3x. Part 1 is find a set of values of x for which y is greater than 9. So that's a question. I think आपसे जिन्होंने ये पूछा उनसे स्टार्ट नहीं हुआ ये क्वेश्चन, अदरवाइज इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। y is greater than 9 और आपको y given है क्वेश्चन में 2x square minus 3x. So replace y, so it means 2x square minus 3x is greater than 9. So 2x square minus 3x minus 9 is greater than 0. So you have a quadratic inequality. And you know very well how to solve this quadratic inequality. मुझे आप ये बताइए कि जब आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो व्हाट आर द इंटरसेप्ट्स, एक्स इंटरसेप्ट्स क्या हैं वो मुझे बताइए। कैलकुलेट एग्जैक्ट नहीं आ रहे। -1.53 -1.5 and 3. So one is -1.5 and other is 3. और ये कैसे आए हैं, आई होप सबको पता ऐसे ही है, बताएं फिर। कहाँ किया था हमने? ओ लेवल 1 dt चैप्टर 1 कितने मेथड किए थे? ग्रेडिएंट से करते थे, ज्यादा बेसिक कर रही है तो रोटेशन मेथड है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है, और अगर कुछ भी नहीं आता तो फिर ए लेवल में मैथ रखना नहीं चाहिए, एक बात। और दूसरी बात, अगर टाइम सेव करना चाहते हैं फॉर ड्यूरिंग प्रैक्टिस तो कैलकुलेटर से भी हो जाता है, आपको पता है इक्वेशन सॉल्व, लेकिन पेपर में टाइम सेव नहीं करना, मार्क्स लूज हो जाएंगे। सो आपने वर्किंग शो करनी है। सो वी गॉट टू सॉल्यूशन 1.5 and 3, बट द प्रॉब्लम हियर इज दिस इज इनइक्वालिटी। हमें तो आंसर इक्वल टू नहीं, नीड टू राइट द इनइक्वालिटी। और हाउ टू डिसाइड द इनइक्वालिटी? बाय sketching. Say this is -1.5, this is 3, the coefficient of x square is positive, so the curve must open upward like this. This is greater than 0. So greater than 0 means shading will be above the x-axis. So above the x-axis is the shading, so that part should be shaded. Here this part should be shaded. Here is the shading. So now this shading will decide the sign of inequality. Your shading is on the left of -1.5, so less than -1.5. Your shading is on the right of 3, so greater than 3. So that was question number 12, part 1. Question 10, part 1, 2. Question 10, part 1, 2, Rohab. Question 10 has two parts. Question 10 is the line y is equal to x over k plus k. ये line है, curve नहीं है. The line y is equal to x over k plus k, where k is a constant, is tangent to the curve 4y is equal to x square at point P. Tangent at point. Find the value of k. G, which case of discriminant is this? Second, b square minus 4ac is equal to 0. So b square minus 4ac is equal to 0. ये केस है, लेकिन b ac कहां से आएंगे? We need to solve them, we need to equate them. So we will get, so put the value of y here. y यहाँ substitute कर दें, इनको simultaneously solve कर रहा हूं मैं. For the y is x over k plus k is equal to x square. So स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए एलसीएम, सो x plus k square over
ओवर के इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई करें इनसाइड और के को उस तरफ, के एक्स स्क्वायर. So here 4x plus 4k square. Shift everything on the right. Mean we will get kx square minus 4x minus 4k square is equal to 0. Because now we got the standard form. A is k, b is minus 4, c is minus 4k square. This is the line is tangent to the curve. The line is tangent to the curve means that's a second case of discriminant. बेशक स्टेटमेंट मिडिल में लिखते हैं बिकॉज इट इज टेंजेंट, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. b is minus 4, a is k, c is minus 4k square is equal to 0. so यहां से आप k फाइंड कर लेंगे, which is 16 plus 16k cube. Is that cube? So 16k cube is equal to minus 16. So k cube is equal to minus 1 and k is equal to minus 1 cube root. That was part 1. If they are tangent, find the value of k. So we got the value of k. Second part, find the coordinates of p. p कौन सा पॉइंट था जहां पे कर्व और लाइन क्या थे, टेंजेंट थे, उस पॉइंट को p कह रहा है. So point p is basically the point of intersection of the line and curve. तो इसका मतलब लाइन और कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. अब देखिएगा आप लोग कैसे करते हैं, बिल्कुल वो ठीक है, जरा एक मेथड जरा देख लीजिएगा. आप लोग क्या करते हैं, क्योंकि k आ गया तो k आप पुट करते हैं -1 यहाँ पे भी और इधर भी पुट करेंगे, आप हर जगह पुट करेंगे. जब k आ गया तो इसका मतलब यू हैव द इक्वेशन ऑफ लाइन एंड द इक्वेशन ऑफ कर्व इन टर्म्स ऑफ y एंड x, और फिर उनको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं. जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो एक थर्ड इक्वेशन आती है उसके क्वाड्रेटिक. सो आप अगर सॉल्व करेंगे तो एट द एंड तो यही इक्वेशन बनेगी ना. तो डायरेक्ट आप k इधर ही पुट कर दें ताकि वो जो पहले वर्किंग हुई है वो आपकी यूटिलाइज दोबारा हो जाए और दोबारा उसको करने की जरूरत ना पड़े. सो डायरेक्ट इसी में k पुट करें. सो अगर हम इसी में k पुट कर दें, सो वी विल गेट k मीन -1, सो -x स्क्वायर -4x और k -1 -4 -1 square is +1, so -4. So we got the equation -x square -4x -4. We usually try to avoid the coefficient of x square being negative, so इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. टेंजेंट है तो सॉल्यूशंस कितने आने चाहिए, 1. तो आप देख सकते हैं इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो आपके पास आ रहा है x + 2 इज इक्वल टू 0. मीन दोनों सॉल्यूशंस आपके आ रहे हैं x इज इक्वल टू -2. so there is only one solution, and put that x is equal to -2 in any of the above equation. इसी में अगर पुट कर लें या उस दूसरे में पुट कर लें, so y क्या आएगा, y is equal to 1. so we got -2 1. these are the coordinates of p. I think के मैंने डिस्कस कर लिया है. so we are left with I think 11 part 2 and 3 only. 11 part 2 and 3. Question 11 is a straight line has equation y is equal to -2x plus k. This is the equation of straight line where k is a constant, and the curve has equation y is equal to 2 over x minus 3.
Part 1, show that the x coordinate of any point of intersection of the line and the curve are given by the equation this. तो पार्ट 1 आप में से किसी ने निकाला, वो तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया. सो यू गॉट द इक्वेशन इन पार्ट 1, 2x स्क्वायर minus 6 plus k x plus 2 plus 3k. Remember, अगर आपको a b c में कहीं यूज करना पड़े तो b is, so in this equation your a is 2, b is minus 6 plus k. माइनस आप लिखेंगे, वो एक अलग बात है कि जब वो b स्क्वायर होता है तो वो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, लेकिन इनिशियली यू शुड रिमेंबर कि b में माइनस आता है. Okay, second part, find the two values of k for which the line is a tangent to the curve. Same question जो पहले अभी हमने किया. So it says line and curve is tangent. I am doing second part. So tangent mean b square minus 4ac is equal to 0. So the value of b is minus 6 plus k whole square. This is b square. Minus 4a is 2, c is 2 plus 3k. So स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा. सिंपली आपने 6 प्लस के होल स्क्वायर ओपन करना है, और वो क्या आएगा, 6 प्लस के होल स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर. सो 36 प्लस 12k प्लस k स्क्वायर. 4 times 2 8, 8 times 2 16. 24k is equal to 0. k square 12k minus 24k is minus 12k. 36 minus 16 is 20. So midterm break 2 and 10 possible है, तो आंसर 2 और 10 ही आएगा. So solve this equation, you will get two possible values of k, which is 2 and 10. क्वेश्चन में चेक करें क्या उसने कहा, वैल्यू कहा, वैल्यूज का कोई रिजेक्ट तो नहीं हो रही. फाइंड द टू वैल्यूज ऑफ के. बिल्कुल ठीक चल रहे हैं फिर. सो थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है. द टू टेंजेंट्स, अब टू डिफरेंट टेंजेंट है. एक k इज इक्वल टू 2 पे अलग टेंजेंट होगा और k इज इक्वल टू 10 पे एक अलग टेंजेंट होगा, लेकिन दोनों साइमल्टेनियस एट अ टाइम एग्जिस्ट नहीं करेंगे. डिपेंड कर, इफ k is 2 then the tangent will be different at different point. If k is 10 then the tangent will be different. Okay, it says the two tangents given by the values of k found in part 2 touch the curve at points a and b. मीन आप ये अज्यूम कर लें, जब k 2 लिया तो वो कहां टच करेगा, किस पॉइंट पे, a पे, और जब k 10 लेंगे तो वो कहां टच करेगा, कर पॉइंट b पे. You have to find the coordinates of a and b. So a find करना means simultaneously solve करना है. जी मैं मेथड बता देता हूं थर्ड पार्ट के लिए. फर्स्ट यूज k is equal to 2 here in that equation. So k2 यूज करेंगे तो you will get an equation 2x square minus 8x plus 2 3 6 plus 2 8 is equal to 0. आपके पास x कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा और ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे तो y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा. जी बता सकते हैं कि क्या x कोऑर्डिनेट आया है. आई थिंक 2. x कोऑर्डिनेट्स को सॉल्व करने से 2 and 2 आएगा, बट बोथ आर रिपीटेड. सो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू को ओरिजिनल इक्वेशन में यहां पुट कर दें कहीं भी, तो आपके पास y कोऑर्डिनेट, डू वी नीड y कोऑर्डिनेट एज वेल, यस, a and b both कोऑर्डिनेट्स. सो 2 पुट करने से y कोऑर्डिनेट आ रहा है 2 over -1 -2. सो इट मींस वी गॉट a 2 -2. जरूरी नहीं है कि मैं इसको a ले लूं, क्योंकि उसने कोई ऐसा स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया a कौन सा b, तो अगर इसको आप b कह देते हैं तो भी गलत नहीं होगा. पार्ट 2 अगेन, पार्ट 2 की तरफ वापस जाता हूं. ओके, अब आप यूज करें k इज इक्वल टू 10. सो जब k इज इक्वल टू 10 यूज करेंगे तो वी विल गेट 2x स्क्वायर minus 16x 32 is equal to 0.
और यहां से x आएगा 4. So if x is 4, use x is equal to 4, so y will be 2. So the coordinates of b are 4, 2. So once you have the coordinates of a and b both, so then you can find the equation as well by using our coordinate geometry topic. Equation of straight line y minus y1 is equal to m into x minus x1. ग्रेडियंट फाइंड करें, c फाइंड, अगर आप y is equal to mx plus c भी यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. जी मोहम्मद उमर, you were asking for second part, and second part was, question में था कि line and curve are tangent. So tangent mean this is the second case of discriminant. B square minus 4ac is equal to 0. So we use the second case when b square minus 4ac is equal to 0, where you can see a is 2, part 1 से, b is minus 6 plus k, c is 2 plus 3k. वो मैंने वैल्यूज पुट की और फिर माइनस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गया, तो मैंने सिंपली 6 plus k होल स्क्वायर ओपन किया. By using a square plus 2ab plus b square, I got the equation k square minus 12k plus 20 is equal to 0. और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फिर आप सॉल्व कर लें either by factorization, quadratic formula, completing the square, you will get two values of k, which is 2 and 10. Right? Okay. Any other question? I think कि मैंने कोई पार्ट मिस नहीं किया जो चैट बॉक्स में लिखे हुए हैं. ओके, मैं चाहता था कि मैं आज थर्ड टॉपिक फंक्शन स्टार्ट करूं, जो कि नहीं पॉसिबल हुआ, लेकिन हम इस टाइम को यूज करते हैं, एक आपका छोटा सा टेस्ट लेते हैं. Okay, here's the question is, question 7 and 8, these are your tests. अभी करने हैं हमने 7 and 8 a mini test, जो कि हम खुद ही चेक करेंगे, लेकिन कोशिश करें राइट लेफ्ट ना देखें. तो सिर्फ मैं चाहता हूं आप खुद करें, आपको आइडिया हो कि आप कहां पे हैं. सो आई एम टेलिंग कि क्या लिखा हुआ है इन क्वेश्चन 7. चले पहले मैं क्वेश्चन 7 को फोकस कर देता हूं थोड़ा सा. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. There is a line whose equation is y is equal to 3 minus 2x. There is a curve whose equation is y is equal to 4 minus 3 under root x. ये 3 under root x है. Both are intersecting at point A and B. You have to find by calculation the coordinates of A and B. सर आपने भी कैसा टेस्ट लिया, साइमल्टेनियसली सॉल्व करनी आती हैं, ये तो हमारे लेफ्ट हैंड का काम है. तो मुश्किल सा क्वेश्चन देते. 4 minus 3 root x.
Please don't share your answers in the chat box. इवन नॉट इन प्राइवेटली भी नहीं करना, क्योंकि प्राइवेटली भी आप शो करेंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्टर पे शो होंगे, और यहाँ पे जो सब बैठे हुए हैं वो चाहते ही नहीं है आपका आंसर देखना, वो कहते हैं हम अपना आंसर खुद फाइंड करेंगे. यस, रूट एक्स एक्स के ऊपर है सिर्फ, 3 टाइम्स अंडर रूट एक्स, ये क्यूब रूट नहीं है, 3 टाइम्स अंडर रूट एक्स है. तो आपने क्या लिखा हुआ था? You are done with the question 7, so here is question 8 as well. जी क्वेश्चन 8 में मैं फर्दर क्लियर कर दूं. दिस इज रिटन y is equal to x raised to power 2 by 3 minus 1, y is equal to x raised to power 1 by 3 plus 1. हाँ, x power 2 by 3, एक में 2 by 3 और एक में 1 by 3. Yes, you can. गलत नहीं है, और लेकिन ये जो आपने स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए स्क्वायर लिया है वो गलत नहीं है, लेकिन इधर आपने क्या किया है, आपने इसका स्क्वायर ओपन किया है, तो ये इसका स्क्वायर ओपन करने से इसका स्क्वायर अलग तो नहीं आ जाएगा. ये अब आप अगर सोचें a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी तो आपको नहीं आती, तो वो ऐड हो रहे हैं, वो -4 + 3 आपको, लेकिन इसकी तरह इससे करने की जरूरत नहीं थी. गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है मेथड, वो रिड्यूस करने वाले मेथड से आपको कर लेना चाहिए.
Okay, how many of you have done both questions, 7 and 8? So here, 1, 2, 3, 3 in person and 2 online. 4 in person, 3 online. Rahim, Moin, and Ibrahim, they are saying that they have done. Abdul Rahman Ranja has done as well. Okay, now you can share your answers. Now you can share your answers to everyone. G, share your answers for both questions 7 and 8. Yes, Hussein, what's your answer for 7? Okay, let me write here. You are saying A is, for question 7, A is 1 by 4, 5 by 2, whereas B is 1, 1. And your answer for question 8, minus 1, 0, and 8, 3. Okay, I hope कि क्वेश्चन 7 तो सब कर चुके होंगे. किसका आंसर क्वेश्चन 7 का करेक्ट नहीं है या हो नहीं रहा क्वेश्चन? ये मैंने अभी मुझे इन्होंने बोले तो मैंने लिखना है. वैसे मैं आपको आंसर शो करता हूँ ओरिजिनली क्या है. मेरा ख्याल है यही होंगे. देख लेते हैं. So the answers for question 7 and 8 are here. अच्छा, क्वेश्चन 7 में सिर्फ x कोऑर्डिनेट का था. मैं देखता हूँ क्वेश्चन में क्या था. जी, question 7 was find by calculation the x coordinate of A and B. See, the question was to just find the x coordinate of A and B. So question 7 के answers are 1 by 4 and 1. Mean these are the x coordinates, 1 by 4 and 1. And for question 8 the answers are 8, 3 and minus 1, 0. जी, अब बताइए क्वेश्चन 7 किस किस का इनकरेक्ट है. ओके, फिर मैं क्वेश्चन 7 अटेम्प्ट करता हूं. जिनके क्वेश्चन 7 और 8 दोनों करेक्ट आ चुके हैं, जो कि तो फिर कर सकते हैं छोटी. ओके, क्वेश्चन 7 we need to solve them simultaneously. So if I solve them simultaneously, I will get 3 minus 2x is equal to 4 minus 3 under root x. Shift everything either on the left or on the right. So I'm shifting on the other side. So positive 2x minus 3 under root x plus 4 minus 3. So we got 2x minus 3 under root x plus 1 is equal to 0. This is not quadratic. We can reduce this to quadratic equation by supposing that under root x is equal to t. If under root x is equal to t है तो under root x का स्क्वायर क्या होता है? x.
और t का स्क्वायर t square. So if under root x is equal to t square, then x will be t square. So 2t square minus 2t plus 1 is equal to 0. कर सकते हैं, बिल्कुल मैं उसकी तरफ आऊंगा, मैं पहले ये मेथड करवा दूं, लेकिन वो स्पेसिफिकली इस पे अप्लाई होगा। हम जनरली बेसिकली क्वेश्चन क्या करें, वो इक्वेशन जो कि नॉन क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो सकती है, तो उस तरीके से करें। लेकिन अगर कोई स्क्वायर करके कंप्लीट आपको स्क्वायर रूट कैंसिल कर रहा है, तो वो भी मेथड गलत नहीं है, वो भी ठीक है, लेकिन फिर आपको क्वेश्चन हैंडल करना आना चाहिए। ओके, बताइए इसमें क्या इसके टू सॉल्यूशंस आते हैं। सॉरी, टू सॉल्यूशंस आर, टू सॉल्यूशंस क्या हैं इसको सॉल्व करने से? 1 and 1/2. So t is, I think एक नेगेटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, 1 और नहीं, t 1/2 और दूसरा अदर इज 1। फाइनल आंसर आप बता रहे हैं, ये सी के -1 और 2 आ रहे हैं। चले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ खुद। Okay, I'm solving this equation. So midterm break 2t square minus 2t, midterm break तो ये इसकी, okay, so that's a mistake. Thank you. So ये actually this was -3 here, so -3 है ये. This is -3. Please make the correction. This is -3. So then t will be 1 and -1 by 1 and 1/2. So this is t, and we know t is under root x, so it means under root x is equal to 1. Under root x is equal to 1/2. And how to find x now? Take square on both sides. So square of 1 is 1 and the square of 1/2 is 1/4. Daniel, is that clear? No, you will get 2 values. Okay, now question 8. Question 8 is, find the coordinates of the point of intersection of the curve y is equal to x raised to power 2/3 minus 1 and y is equal to x raised to power 1/3 plus 1. मैं इसके initial 2 steps कर देता हूँ, उसके बाद ये हो जाएगा. So we have to solve them simultaneously. So x raised to power 2/3 minus 1 is equal to x raised to power 1/3 plus 1. So shift everything on the left, x raised to power 2/3 minus x raised to power 1/3 minus 2 is equal to 0. ये इस तरह क्वेश्चन कल भी हमने किया था, आई होप आपको याद है. So we will suppose here let x raised to power 1/3 is equal to t. So if x raised to power 1/3 is t, then what will be x raised to power 2/3? It will be t square. So supposition करेंगे, put करें t square minus t minus 2 is equal to 0. So you will get 2 solutions of t. और जब वो 2 solutions of t आ जाएंगे, so we will find x and y. Is that clear? See you tomorrow with the new topic, that is function. Allah Hafiz. क्या ये उस बिल्कुल स्क्वायर लेके भी कर सकते हैं.